and this is because red, because ये कलर जो प्राइस कैंडल है that is red in color, that is why the volume color is red. So it is color coordinated, है ना? Just to match the price color, it is green. Because it is red in color, they match the price candle with the volume candle. So this is volume here and this is price. समझे आप? तो इसको कलर कोऑर्डिनेट करें. बट आइडियली द कलर शुड बी न्यूट्रल. ये तो कोई न्यूट्रल, या तो ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए. इसलिए इट इज व्हाइट बैकग्राउंड, इट शुड बी black, or if it is a black background, it should be white. So it should be neutral color. It should not be a color which is green or red. बट ये फिर ऐसा होता क्यों है? बिकॉज यू नो इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग कि चलिए यहाँ पर शायद बाइंग हो रही है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर बायर भी है, फॉर एवरी बाय क्वांटिटी देयर इज अ सेलर एंड फॉर एवरी सेल क्वांटिटी देयर इज अ बायर, तो फिर प्राइसेस ऊपर या नीचे जा कैसे? हाउ द प्राइसेस मूविंग नॉर्थवर्ड और व्हाई द प्राइसेस मूविंग साउथवर्ड? इसकी समझ भी जरूरी है. So one thing we have clarified is that the number of buyers and sellers are equal, except for few cases where you know आपने शॉर्ट सेल किया और वो ऑक्शन के लिए चला गया. ठीक, जहां पर आपने स्क्वायर ऑफ करना भूल गए और आपका जो ब्रोकर है या ट्रेडिंग मेंबर, अभी उससे बुलाते हैं, वो ही फॉरगॉट टू स्क्वायर इट ऑफ इन एन इंट्राडे ट्रांजैक्शन. ठीक, उस केसेस में वो शॉर्ट सेल हो गया, नॉट स्क्वायर्ड ऑफ. तो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ ये और ऑक्शन के लिए चला गया. और आपको पता है कि ऑक्शन में हमेशा महंगे प्राइस पे आपको फिर बेचा जाता है. सो व्हेन यू बाय दिस टू स्क्वायर ऑफ द ट्रांजैक्शन, यू आर बाइंग एट अ हायर प्राइस. ये कैसे पॉसिबल है? सो इन अ फिजिकल वर्ल्ड, पहले आप बाय करते हैं कोई चीज और फिर मान लीजिए आप ट्रेडर हैं और आप कुछ ट्रेड करते हैं, मान लीजिए पेन खरीदते हैं और आप उसके प्रॉफिट पे बेचते हैं. सो इट इज, यू कैन ओनली डू फर्स्ट यू विल बाय एंड देन यू विल सेल. In a financial world, you can first buy, ये ट्रांजेक्शन आप ऐसे कर सकते हैं, and then you can sell. But in a financial world, ये तो स्टेप वन है. दूसरा आप कर सकते हो, पहले आपने उसको महंगे दाम पे बेच दिया और जब प्राइसेस गिर गए, लोअर भाव पे आपने खरीद लिया. सो यू ऑलवेज सेल एट अ हायर प्राइस, whichever way you do it, and you always buy at a low price. So you can first buy at a low price and you can sell at a higher price. That's transaction number, that's the normal way in a physical world. या फिर उल्टा भी हो सकता है, जहां पर फाइनेंशियल वर्ल्ड में पहले आपने सेल कर दिया हाई प्राइस पे और बाय कर लिया लो प्राइस पे. तो ये तो आपको पता है शायद, मोर और लेस. कई बार और ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है 3:30 से पीएम से पहले. कट ऑफ टाइम होता है जैसे 3:10, 3:15. सो योर ट्रेडिंग मेंबर यानी कि ब्रोकर आपके जो ओपन स्क्वायर ऑफ पोजीशंस हैं या इंट्राडे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करता है. बट अगर स्क्वायर ऑफ नहीं होगा तो वो ऑक्शन के लिए जाता है. ओनली इन दोज केसेस यू विल सी दैट, मान लीजिए स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, ओनली इन दोज केसेस यू विल सी दैट बाय डज नॉट मैच सेल. बट दैट्स वेरी रेयर दीज डेज. बहुत रेयर इंस्टेंस आपने सुना होगा कि ऑक्शन के लिए चला गया. सो आई एम अज्यूमिंग नॉर्मल केसेस कि बाय इज इक्वल टू सेल. फिर द क्वेश्चन इज कि प्राइसेस ऊपर कैसे जाएंगे? प्राइसेस इसलिए ऊपर जाएंगे क्योंकि अगर बायर्स खरीदने में एग्रेसिव हैं तो प्राइसेस वुड स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. क्वांटिटी इज द मैच्ड क्वांटिटी इज सेम. जितना बायर अगर बेच रहा है, अगर सेलर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या जितना सेलर बेच रहा है बायर ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो ट्रांजेक्शन मैच ही नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा. सो व्हेन बायर्स नॉट इन क्वांटिटी बट इन प्राइस दे आर मोर एग्रेसिव, जो भाव आ रहा है उसको ऑब्जर्व करता जा रहा है, प्राइसेस वुड मूव अप. द अदर कंडीशन इज व्हेन द सेलर्स आर मोर एग्रेसिव in terms of the price, not in terms of the quantity. इस क्वांटिटी जितनी बाय होगी वो जो सेलर जितना बेच रहा है, जब जितनी मैच होगी. सो सेलर्स अगर बहुत एग्रेसिवली बेच रहा है और बायर्स जो है उसको उतनी एग्रेसिवली बाय नहीं कर पा रहे हैं, देन द प्राइसेस वुड स्टार्ट क्लाइंबिंग साउथवर्ड. ये क्लियर है क्या आपको? हाउ प्राइसेस मूव अप और डाउन इवन दो द क्वांटिटी, the buy quantity in 99% of the cases, or 99.99% of the cases except for auction cases, remain same. So buyer is equal to seller quantity. This is known as order matching, right? इसके बिना orders execute नहीं होंगे. और final prices जिसे हम LTP बोलते हैं, right?
So there is a bid quantity, there is a sell quantity, there is a bid price and there is a sell price. सेल प्राइस को आस्क क्वांटिटी या आस्क प्राइस भी बोलते हैं, लेकिन जो फाइनल मैच्ड क्वांटिटी एंड प्राइस है उसको एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोला जाता है. ठीक. सो यू हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट इन दिस क्वांटिटी दिस इज एक्चुअली टीटीक्यू, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है. क्या ये? टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है ना. सो दिस इज टोटल टर्नओवर. सो दिस इज नोन एज वॉल्यूम. इसमें बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं. Is this point clear to everyone? Yes or no? Ladies and gentlemen, please clarify that this is clear to you. You've understood this? Yes, clear. कोई डाउट है इसमें किसी को? Any doubts here? Please ask your questions. Kindly unmute yourself and please ask. ठीक है, so I am assuming that there is no doubt here as far as the questions are concerned. सर अजय अग्रवाल, बट Yes. यहाँ पे कहीं पे आप वो ये पॉइंट का भी तो कुछ होना चाहिए ना कि किस पॉइंट पे परचेज करना चाहिए, वाई किस पॉइंट पे करना चाहिए. वो तो सर अभी तो पूरे क्लास है, 5-6 सेशन है बस, अदर से तो उसमें तो आगे है. अच्छा अच्छा. प्रोडक्टिव क्लास. Sir, hello. Yes. Sir, what you exactly mean by the buyers become aggressive and the price go up and the sellers become aggressive and the price goes down? Like exactly what is happening there? See, what I'm trying to tell you that the number of quantity buyers and sellers are equal. So in this quantity that you see here, it's the volume that you see. And where would you see this? So I will plot it here and point my cursor there. Please look at this. What is the volume that you read, sir? On the top in the encircled one. Yeah, 118 million. 118. Just give me 1 second. So this is 118 million that you read here. And so just give me 1 second. Okay, so am I still audible? Voice Yes. is? Yeah. Yes. So this is 118 million. Now then my question is, 118 million, do you have buyers only here? Do you have sellers only? Because this is green in color. The color that you see is green. So this is only buyers or this is sellers also? Or this is just buy and sell? That's the first question. So if you can address that question. Yeah, there is both equal number of sellers and buyers. There are equal number of buyers and sellers. So for every buy, if there is a seller, and for sell, if there is a buy, then how the prices are moving up? That is the question I was asking. So remember COVID times when the announcement was made that the market would be shut. I mean, there'll be lockdown and nothing will be allowed to open. Everyone flocked to that Kirana store, the next door store, if you remember that. And do you even remember what price you bought on that particular night? Because the quantity available was the same, right? Probably he was selling in a monthly basis or a weekly basis, but the prices started shooting up, and especially in the case of veggies, because more and more buyers were willing to buy at whatever price the seller was willing to sell. In this case, the buyers are more, and hence the prices rise. I'm sure you've heard of instances where you've seen that tomato has been thrown by the farmer, or onion has been thrown on the farmer by the farmer on the road because he was not getting a price. He was getting 2 rupees kgs. I'm sure you've heard these of stories. In this case, the seller is aggressive and he is willing to offload whatever the quantity that is growing remains fixed. He is willing to offload at any price. Jo bhi uske paas bhav hai, us pe he is willing to sell. In this case, the prices would start tumbling down, and this is what you see. The sellers are more aggressive in selling. It is absorbing. Jo bhi buyer buy kar raha hai, he's more aggressive in selling. That's how the prices are falling. Do you agree? Okay. है ना? So that is what I am trying to justify, that if the buyers and sellers, अगर quantity equal है सर, तो फिर price ऊपर नीचे जा कैसे रहा है? How does that make? So it's all about the orders, number of orders. Yes. Okay. Yes. It's all about the number of orders. That's absolutely correct. Yeah. So that's absolutely correct.
Okay, so that is the point that I was trying to make, which is on the volume side of it. You know? So just give me 1 second. So yeah, so this is about the quantity, and the volume has an impact on the quantity. How many types of charts are there? Let's also understand that. So I will change here. You have this functionality here where you can change the charts. So look at this one. This is known as a candle chart because it looks like a candle, though it is not exactly like the candle, but candles usually look like this. It also has a bottom to it. Sometimes you'll see that is a thread or a needle at the bottom also. More or less, it looks like a candle. So they call it a price candle. Then you have the line charts, which is simple charts that you read about. You have whole lot of charts here, but I am not discussing about. I mean, all of it is not useful. There are tons of them, but this is the one that we're talking about. It is majorly used. The second one is line chart that we've started using. So we started criticizing it. We became a critique of these line charts. Okay, and okay. So this is line chart which we use, and there are other charts also, but which is a paid feature, which is a volume candle has recently been introduced. Okay, so this is a volume candle, which I'll show you to what it means. So if you click here on the volume candle here, so wherever there is a high volume, you'll see that those candles are thick. Do you notice this? Yes or no? Do you notice this? Yes, no? Yes, but I have a question, please. Yes, ma'am, please. So, if that is a fat candle, which means that there is high volume, but that doesn't reflect in the volume on x-axis. Very good question, ma'am. I really appreciate and thanks for asking this question. Very good question. So what I will do is, you're not seeing volumes here for the primary reason because, and I think I know the reason. Your question observation is absolutely correct. Even I don't see that. But then how do I justify this? So let me just give me 1 second. First of all, what I'll do is, so let me clear this thing. There you go. Now I will put this. Oops. Click here. And so this is a fat candle that you're seeing here. So thick. So this definitely is a thick candle here. A good observation, and also look at Red candle अभी भी नहीं वो match कर रही है. I think you're talking about this one. No. Yeah, that one. Correct. So I think it's a very good observation that you captured. So let me congratulate you on that. I think you captured something which is slightly later in the class. Okay. I must thank you for observing this. So first of all, why this sort of formation is there? This is so both buyers, and so the volume is very high. Point number one. That's why. So it is a fact that volume is high. That cannot be denied, and then that's why you have this candle, which is the bar height is really high. Point number one. Second is the reason you have this kind of a candle is almost this kind of candle is because buyers and sellers are both active, ma'am. So, and that's why you have a thin candle. Is that clear? And I will clarify slightly later, maybe in the next 2-3 days.
So I'm your parking you your question aside because it could be too early in the session. So, but does that mean that in the fat green candles on the left side, the buyers are more in number and sellers are less? And they have not sold अच्छा, intraday basis. Here Hmm. you are seeing, say, had the buyers retained and they're not sold, possibly the candle size would have been this much, which possibly would have been slightly bigger than this candle, slightly bigger than the adjacent candle to the left side. So this we consider this sometimes as a trap candle also, and I'll talk about it. So please allow Okay. before we reach there, but I must congratulate that. I mean, really feel happy when the participants ask this kind of question. I mean, you cannot feel how contented I feel today. Rather, having a participant which does not speak at all. Second thing that I would like to bring your attention to is double click on this one, on the volume candle. And you tons of videos on YouTube on how to do this. You have a functionality called volume MA, which is not checked as of now. Okay. So let me click here and you will notice use this right thing, and I will use a thicker line here and a more visible this thing, and I am saying hit OK. Now, ma'am, do you see that both the green candle and the red candle is above this horizontal line? Do you notice this? Yes. So that is the average point of the candle for the last 20 days. So notice this is moving average length. That means what? From here, and if I take the simple average, if I take the data of the last 20 days, so I take, for example, Q1, then I take the volume of Q second date, Q3, and I can count this as say Q1, and I go back. So maybe Q1 and then Q minus 2, Q minus 3. So I'm going left. And when I take a simple average up till say the 20th day, then I take that volume and I simply divide by 20. So I get an average volume, which is this volume. Okay. So which means that on your extreme left, you are beyond the 20 days. That is some other average because, I mean, I'm guessing because the line is still high. The bars are higher. Right. The higher bars are also covered under that main line. The bars are also covered. So even in case of green, this thing, the volume is, the actual volume is greater than the average volume. यहाँ पर ज़्यादा है. मैं आपको तो ये probably 20 days के बाहर है. यहाँ कुछ और average होगा शायद. यहाँ पर average different होगा मैम. ठीक है. फिर यहाँ पर average different होगा. अब जब यहाँ पर average consider कर रहे हो तो ये दोनों भी average को influence कर रहे हैं. Because ये volume आज की है, फिर second day मतलब -2 है, T-3 है, going backwards. तो ये volume भी influence कर रहे हैं. इसका मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा volume था, है ना? Otherwise इतने, because यहाँ पर आपका average already shoot up हो चुका है. नहीं, जो y एक्सिस से एकदम सटा हुआ है, जो शुरू हो रहा है जहां, इफ यू गो टू, ये यहाँ पे ये जो आपका एवरेज लाइन है, इट इज ऑलमोस्ट एट द इज टचिंग द पीक ऑलमोस्ट. या दैट्स व्हाई आई एम वंडरिंग कि यहाँ पे एवरेज कुछ और होगा. ये yes, लाइन गलत है. हाँ, मैं वही डेटा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैम. सो लेट मी ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस. वी कम हियर, और अगर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर ना हाइड करने का फीचर है. सो दिस एरो थिंग इज देयर, और मैं इसको ये देखिए. सो इफ यू लुक एट दिस वन, ठीक है. ऑल्सो लुक एट दिस वन. सो एक मिनट दीजिएगा मैम. So look at this one. So what I'm trying to show is ये देखिए. So this is, अब आप देखें, गौर से देखिएगा. So I'm pointing here. Do you see the
volume in red font? जी. So that is 73, लगभग 74 million. That means it is about 7.4 odd crores. Because the price candle is in red and also the font is in red, so I know कि actual volume जो है that is 7.5 crore के आसपास का है. And this black font and the black color, so that's how they match. So 18 million यानी कि लगभग 1.25 crore का जो वॉल्यूम है, and that is the average volume. So you have actual volume plotted and average volume plotted here. अब आपका सवाल था इस कैंडल को लेकर, वहां देखिए वॉल्यूम 8.5 करोड़ के आसपास का है, 85.24 million, and the average volume is 41.71 million, so which is about 4.25 करोड़ का वॉल्यूम. So averages are different. ठीक है, thank you. है ना? So it is a dynamic average, and that's why it's called a moving average. ठीक है? So it's a dynamic average, and hence it is known as moving average. दूसरी जगह जहां आप इसको देख सकते हैं, और वो है डेटा विंडो में. थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, पहले बहुत इजी था समझाना, तो मैंने डेटा विंडो आई हैव क्लिक्ड, फिर मैं डेटा विंडो पे क्लिक करूंगा, एंड देन आई गो बैक हियर, और यहाँ पर आपके पास ये डेटा सेट अवेलेबल है. सो हाउ हैव आई गॉन हियर? स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. जो भी आप इंडिकेटर लगाओगे उसकी रीडिंग यहाँ आ जाती है. If I point here, so as I shift to the right, you have the data available, data pointers available. Okay? So 1, 2 and 3. ऐसा. If you have a paid account, which I don't suggest or कि subscribe करें आप, but in case you have a paid account, you can also export the data. Whatever is available on the screen, that data will be, for example, the data will be available to you. तो यहाँ आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज वॉल्यूम भी आ गई है, आपके पास वॉल्यूम भी है, ओपनिंग हाई लो क्लोज यानी कि OHLC कैंडल जिसे हम बुलाते हैं, ठीक, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, है ना. दिस इज नोन एज प्राइस कैंडल. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस कैंडल. तो ये यहाँ पर है, एंड यू हैव द क्लोजिंग प्राइस ऑल्सो. तो ये डेट्स भी आ गए आपके. So this is OHLC यानी कि open high low close, and this is the final price क्या था वो भी आएगा. फिर आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम MA भी है, ठीक. So close means it is LTP. That's the last price for that candle. ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? Everyone is in sync so far? LTP means last price, huh? What was the full form? Last traded price, LTP. अच्छा, ठीक, thank you. ठीक. अब इसमें भी कैच है. सो इन द लाइव मार्केट जो भी क्लोजिंग प्राइस है, जो क्लोज प्राइस है, दैट इज LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक. बट 330 से 340 के बीच में, यू नो, इट गिव्स यू the closing price for the day, which is the average price of the last 30 minutes. ठीक. तो जो 330 की प्राइस आपको क्लोजिंग प्राइस मिलेगी, क्लोज प्राइस, that is not equivalent to the, and let me this way, 330 में जो आपने LTP देखा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखा कैंडल का, which is the कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, that is not equivalent to the क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे. क्योंकि 3:30 में जो प्राइस बंद हुआ वही होना चाहिए ना क्लोजिंग प्राइस, बट दैट्स नॉट द केस. क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड बेसिस लास्ट 30 मिनट्स यानी कि 3 से 3:30 बजे के बीच में का एवरेज प्राइस लेते हैं, विच इज पब्लिश्ड अराउंड 340. तो 10 मिनट और लगता है एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए. ना यू में वंडर कि ऐसा क्यों किया था. ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए इन दोज लास्ट 30 मिनट्स. तो इन्फ्लुएंस करने की आप कोशिश करेंगे भी तो एवरेज प्राइस कंसिडर किया जाता है. और किसी के पास भी इतने पैसे या इतनी ताकत नहीं है फाइनेंशियली कि वो पूरे 30 मिनट्स के एवरेज प्राइस को इन्फ्लुएंस कर.
ठीक है, सो इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट